गुड मॉर्निंग गाइस। स्टडी भाई में आपका स्वागत है। मैंने जो सीरीज चलाया था 11 टू 13 जीपीएससी का, उसमें इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा था। उसमें कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे फोर्थ नंबर का, तो आज मैं इसको सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, गिव एन ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द स्टेट ऑफ झारखंड सिंस 1991, डिस्कस द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द स्टेट। 1991 के बाद झारखंड राज्य में औद्योगिक विकास का सिंहावलोकन करें। राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा करें। हिंदी का मॉडल आंसर इस प्रकार है, झारखंड जो नवंबर 2000 में बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना, खनिज संसाधनों से अत्यधिक समृद्ध है। यहाँ कोयला, लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, अभ्रक तथा यूरेनियम जैसी खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। 1991 में उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास में नए अवसर उत्पन्न हुए। भारत का खनिज हृदय कहे जाने वाले झारखंड ने इस अवधि में इस्पात, खनन, ऊर्जा और भारी उद्योगों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। औद्योगिक विकास की प्रवृत्तियां। फर्स्ट, खनन और आधारभूत उद्योग। 1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण से खनन और धातुकर्म क्षेत्र को बढ़ावा मिला। टाटा स्टील, बोकारो स्टील प्लांट तथा हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ने उत्पादन क्षमता का विस्तार किया। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों ने कोयला उत्पादन में झारखंड को अग्रणी बनाया। दूसरा, इस्पात और धातुकर्म। झारखंड देश का प्रमुख इस्पात उत्पादक राज्य बना। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील ने आधुनिकीकरण की और क्षमता बढ़ाई। बोकारो स्टील प्लांट ने भी राष्ट्रीय उत्पादन में बड़ा योगदान दिया। 2000 के बाद निजी कंपनियों ने भी निवेश किया। तीसरा, ऊर्जा क्षेत्र। निजी भागीदारी को प्रोत्साहन मिलने से तापीय और जलविद्युत परियोजनाओं की योजनाएं बनी। प्रचुर कोयला भंडार होने के कारण थर्मल पावर प्लांट्स का विकास हुआ, हालांकि कई योजनाएं धीमी रही। चौथा, लघु एवं मध्यम उद्योग एसएमई। राज्य ने खाद्य प्रसंस्करण, हस्तकरघा, हस्तशिल्प तथा वन आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित किया, लेकिन आधारभूत ढांचे की कमी ने इनकी प्रगति सीमित रही। पांचवा, राज्य गठन के बाद पहल। राज्य बनने के बाद 2001, 2012, 2021 की औद्योगिक नीतियां लागू की गई। औद्योगिक पार्क, आईटी, ऑटोमोबाइल, वस्तु एवं पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। आदित्यपुर जैसे क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजेड प्रस्तावित हुए। छठा, हाल की प्रवृत्तियां। पिछले दशक में राज्य ने केवल खनन आधारित अर्थव्यवस्था से विनिर्माण व सेवा क्षेत्र की ओर विविधीकरण की कोशिश की है। झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जायडा तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों से निवेश आकर्षित करने के लिए प्रयास हुए। औद्योगिक क्षेत्र के सामने समस्याएं। खनिज संपन्न होने के बाद झारखंड में औद्योगिकरण के कई बाधाओं से घिरा हुआ है। पहला, आधारभूत संरचना की कमी, सड़कों और रेल की अपर्याप्तता, विद्युत आपूर्ति की अस्थिरता और औद्योगिक ढांचे की कमी ने बड़े निवेशों को बाधित किया है। दूसरा, कानून व्यवस्था की समस्या। लंबे समय तक नक्सलवाद की चुनौती ने खनिज क्षेत्रों को प्रभावित किया। सुरक्षा संकट के कारण निजी निवेशक हतोत्साहित हुए। तीसरा, भूमि अधिग्रहण और विस्थापन। उद्योगों हेतु भूमि अधिग्रहण का आदिवासी समुदाय ने विरोध किया। विस्थापन व पुनर्वास की समस्या ने सामाजिक तनाव और कानूनी विवाद बढ़ाए। चौथा, पर्यावरण चिंताएं। बड़े पैमाने पर खनन व औद्योगिक गतिविधियां से वनों की कटाई, प्रदूषण और भूमि क्षरण की समस्या बढ़ी। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन का कठिन चुनौती है। पांचवा, नीतिगत व शासकीय बाधाएं। सरकारों के बार बार बदलने और नीतिगत असंगतियों से निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ। अनुमति प्रक्रिया में देरी, भ्रष्टाचार, नौकरशाही भी प्रमुख अड़चने रही। छठा, कौशल की कमी और रोजगार। औद्योगिक विकास के बावजूद बेरोजगारी दर अधिक है। कंपनियां प्रशिक्षित बाहरी श्रमिकों को प्राथमिकता देती है, जबकि स्थानीय युवाओं में कौशल का अभाव है। सातवां, खनन पर अत्यधिक निर्भरता। राज्य की अर्थव्यवस्था अभी भी खनन पर आधारित है। मूल्य संवर्धन और डाउनस्ट्रीम उद्योगों ने विकास का अभाव औद्योगिक विविधीकरण में बाधा है। निष्कर्ष इस प्रकार लिखा गया, 1991 के बाद झारखंड ने खनिज संपदा और भारी उद्योगों के बल पर औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय स्थान बनाया। फिर भी आधारभूत संरचना की कमी, शासन संबंधी बाधाएं, पर्यावरण संकट और सामाजिक असंतोष ने इसकी गति को धीमा किया है। सतत और समावेशी औद्योगिकरण हेतु झारखंड को खनन से आगे बढ़कर विधिकृत उद्योग विकसित करने, कौशल विकास, बेहतर आधारभूत ढांचा, पारदर्शी शासन तथा पर्यावरणीय संतुलन की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे, तभी राज्य अपनी वास्तविक क्षमता का उपयोग कर भारत को औद्योगिक महाशक्ति बन सकेगा। इसका इंग्लिश का मॉडल आंसर इस प्रकार है,
Jharkhand carved out behind November 2000 is endowed with abundant mineral resources, particularly coal, iron ore, copper mica, bauxite, and uranium. Since the onset of economic liberalization in 1991, industrial development in this region has witnessed both opportunities and challenges. The state, often referred to as the mineral heartland of India, contributes significantly to the country's mineral output and has attracted uh, major public and private sectors investment in steel, power, mining, and heavy industries. Industrial growth trends. First, mining and core industries. Post 1991, with the liberalization of the Indian economy, the mining and metallurgy sector in Jharkhand received a boost. Companies like Tata Steel, Bokaro Steel Plant, and Heavy Engineering Corporation continue to expand production capacities. The state emerged as a hub of coal mining through Central Coalfield Limited and other subsidiaries of Coal India Limited. Second, steel and metallurgy. Jharkhand became a leading steel producing state. The Jamshedpur-based Tata Steel, India's oldest private steel plant, underwent, underwent modernization and capacity expansion. Bokar Steel Plant also contributed substantially to India's steel output. Other private firms entered the region in 2000 to leverage its middle base. Power sector. With the liberation policies encouraging private participation, Jharkhand saw proposal for multiple thermal and hydropower projects. Abundant coal reserves uh, supported the growth of coal-based power plant, although implementation has been uneven. Fourth, small and medium enterprises. Alongside large industries, the state encouraged SMEs in food processing, handloom, handicraft, and forestry industries. However, their growth has been relatively modest due to infrastructural bottleneck. 5. Post-2000 initiative. After state formations, Jharkhand adopted new industrial policy 2001, 2012, and 2021 to attract private investment, establish industrial parks, and promote sectors like IT, automobiles, textiles, and tourism. Special economic zones were proposed in areas like Aditpur. Sixth, recent trends. In the past decades, Jharkhand has tried to diversify from being a purely mining-driven economy to a manufacturing and service-oriented economy. Initiatives like the Jharkhand Industrial Area Development Authority (ZIDA) and ease of doing business reforms aim to attract investors. Problem faced by the industrial sector in Jharkhand. Despite its resources, wealth industrialization in Jharkhand has been constrained by several challenges. First, infrastructure deficit. Poor road and rail connectivity in several areas, irregular power supply, and inadequate industrial infrastructure have deterred large-scale investments. The absence of world-class logistics facilities has increased operational costs. Second, law and order issue. For decades, the state has been affected by left-wing extremism, nationalism, particularly in Middle East belts. Security concerns have discouraged private investments and disrupted mining and industrial operations. Third, land acquisition and displacement. Acquisitions of land for industries has faced resistance from tribal communities, leading to social unrest and legal disputes. The displacement of indigenous people without adequate rehabilitation has fueled opposition to industrial projects. Four, environmental concerns. Large-scale mining industrial activities have led to deforestation, air and water pollution, and land degradation. Balancing industrial growth with ecological sustainability remains a challenge. Fifth, policy and governance issues. Frequent changes in governments and policy inconsistency have reduced investors' confidence. Delays in clearance, corruptions, and bureaucratic hurdles have hampered industrial projects. Sixth, skill gap and employment issue. Despite industrial presence, unemployment remains high. Many industries prefer skilled migrant labor, while the local workforce often lack adequate training. The disconnect between industrial growth and employment generation has created social dissatisfaction. 7. Dependence on mining. Jharkhand industrial economy remains uh, heavily dependent on mineral extraction, lack of diversification into downstream manufacturing, and value-added industries has limited balanced growth.
The conclusion written this way: since 1991, Jharkhand has emerged as one of India's most important industrial states due to its rich mineral base and presence of heavy industries. However, the pace of industrialization has been uneven, constrained by infrastructure deficit, government challenges, environmental degradations, and socio-political conflicts. To achieve sustainable and inclusive industrial development, Jharkhand must diversify beyond mining, invest in skill development, improve infrastructure, ensure transparent governance, and adopt environmentally sustainable practices. Only then can the state fully realize its potential as an industrial powerhouse of the India. आपको यह वीडियो कैसा लगा? आगे वीडियो ऐसा आता रहेगा।